हर एसेट को आपके लिए कुछ करना चाहिए। तो क्या सोना आपके लिए जब आपको मुसीबत आए, परेशानी आए, क्या आप उसके अगेंस्ट कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं? This is a big intriguing question for the big family office. Which currency you keep invested on? Since the historical ages, gold has always been a safe haven of investment, and that will continue. This is the only product where the underwriting happens on the ornament, not on the individual. अभी हमारे देश में देखे जाए तो if you default on a EMI of a car loan or if you default on EMI of your housing loan, you're doomed. आपको और कोई लोन नहीं मिलेगा. Gold loan is a very unique business where you not only need your lender's trust, where you also need your borrower's trust. सिंपल है कि इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट की जो आप सबको पसंद है। हम सब भारतवासी सोने से बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं कि हमारे देश में 25,000 टन, सोच लीजिए इस नंबर को, 25,000 टन सोना पड़ा है, लाखों करोड़ रुपए। अब इस सोने का क्या करें? ज्वेलरी है, कहीं पुश्तैनी ज्वेलरी होती है, ये एक बहुत इमोशनल सब्जेक्ट होता है हम सबके लिए। लेकिन जैसे हर एसेट को आपके लिए कुछ करना चाहिए, तो क्या सोना आपके लिए जब आपको मुसीबत आए, परेशानी आए, क्या आप उसके अगेंस्ट कुछ कर सकते हैं, कुछ कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं? यही है लोन अगेंस्ट गोल्ड का जो एक दौर है, और कई यंग कंपनीज भी इसमें जुड़ रही हैं। हालांकि आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनकी कंपनी बहुत पुरानी है और बहुत ही मल्टीपल फील्ड्स से ये जुड़े रहे हैं। कुवैत में बड़े पले ये, और कैलीकट से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की और फिर विदेश गए। उमेश मोहनन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और सीईओ हैं इंडेल मनी के। बहुत बहुत अच्छा लगा उमेश कि आप आए यहाँ पर मुझसे बात करने के लिए, क्योंकि गोल्ड, जैसे मैंने कहा, एक बहुत इमोशनल इशू है हमारे देश में, और फिर भी कई ऐसी नए विकल्प आए हैं जिनके बारे में लोग उतना नहीं समझते। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। Thank you, Vivek. The pleasure is all mine. It's a privilege to be in front of you and speaking to you. थैंक यू सो मच उमेश। एंड ये बताइए सबसे पहले कि गोल्ड जो ये जा रहा है ऊपर, ये आप, क्योंकि आप इस क्षेत्र में हैं, आप लोगों से बात करते हैं, गोल्ड प्राइसेस पर आपकी क्या एक ओपिनियन बन रही है आपके रिसर्चर्स की? ये क्या, किस तरह से दौड़ रहा है, जैसे पता नहीं क्या हो गया इसको? देखिए विवेक, अभी क्या है ना, ये गोल्ड प्राइसेस 10-15 साल, ये 15 साल के पहले कैसे होता था कि दिवाली या अक्षय तृतीया इंडिया के गोल्ड प्राइसेस कंट्रोल करते थे वो डिमांड की वजह से। मगर अभी की हालत ऐसा है कि ऐसे त्योहार और ओकेशंस गोल्ड प्राइस कंट्रोल नहीं करते। ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद, एंड वी बीइंग अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इट इज़ इंटरनेशनल फैक्टर्स जो प्राइस को कंट्रोल करते हैं। अभी तो अमेरिकन इकोनॉमी, तो रशिया यूक्रेन वॉर, द यूरोपियन इकोनॉमी, जो अमेरिका में, जो अमेरिका का डेट बिटकॉइंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो बिटकॉइंस को डॉलर के साथ पेग कर रहे हैं। सो दीज आर ऑल फैक्टर्स which is increasing the demand for gold, automatically increasing the price. और आप देखे जाए तो हिस्टोरिकली देखे जाए तो गोल्ड हैज ऑलवेज बीन द सेफ हेवन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी के हालात में और बोले जाए तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे देश जो अपने डॉलर रिजर्व रखता है, वो अपने डॉलर रिजर्व को भी गोल्ड में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये सब प्राइसेस को कंट्रोल कर रहे हैं और प्राइसेस को ऊपर लेके जा रहे हैं। मगर हम पिछले कई सालों से देखें तो गोल्ड का प्राइस ऐसा गया कि एक नया हाई और एक नया लो बना के गया है, एंड एवरीथिंग इज एट एन एक्सकेलेटेड पॉइंट। सो इट्स बीन गोइंग अहेड, एंड एज आई सेड अर्लियर, जैसे मैंने पहले भी बताया था, सिंस द हिस्टोरिकल एजेस गोल्ड हैज ऑलवेज बीन अ सेफ हेवन ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड दैट विल कंटिन्यू। पर पहले जैसे कहते थे कि जब भी क्राइसिस होती है दुनिया में, तब गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं, जैसे सेफ हेवन। इसमें आप जो कह रहे हैं, एक एडिशनल जो एक डायमेंशन आ गई, वो ये आ गई कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं
वो डॉलर की बजाय कुछ हद तक गोल्ड खरीदने लग गए अपने सिस्टम में। क्या वो प्रक्रिया अभी भी चल रही है? क्या आप मानते हैं कि उनकी जो बाइंग है बैंक्स की, सेंट्रल बैंक्स की, क्या वो उन्होंने कर लिया अपना जितना लेना था, अब कंज्यूमर डिमांड है? नहीं, वो एक फैक्टर है, और जितना कन्वर्जन होता है उतना डिमांड बढ़ते जा रहा है। ये देखे जाए तो एक आप एक बड़े फैमिली ऑफिस, जब मैं फैमिली ऑफिस के बारे में बोल रहा हूँ, इट्स लाइक द ओल्ड यूरोपियन फैमिली ऑफिस और ओल्ड जापानीज फैमिली ऑफिस। बिकॉज इफ यू से, अगर आप एनालिसिस करें तो 8 जनरेशंस 7 जनरेशंस के फैमिली ऑफिस यूरोप या जापान में मिलते हैं, okay? और यूएस में मिलते हैं 3 जनरेशंस 4 जनरेशंस फैमिली ऑफिस। ये फैमिली ऑफिस से अगर आप इन्वेस्टमेंट हेड से बात की करें तो सिर्फ वो एक क्वेश्चन पूछेगा, मैं अपना इन्वेस्टमेंट किधर करूं, और वो जवाब में ऐसा बताएगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट कौन से करेंसी में रखो। दिस इज अ बिग इंट्रिगिंग क्वेश्चन फॉर द बिग फैमिली ऑफिसेस, व्हिच करेंसी यू कीप इन्वेस्टेड ऑन। क्योंकि अगर वो 4-5% भी करेंसी मूवमेंट भी फर्क पड़ता है, फर्क उनका पड़ता इतना है, वॉल्यूम ज्यादा है एग्जैक्टली। पैसे का। सो पॉलिटिकल सिनेरियो और इकोनॉमिकल मार्केट सिनेरियो के कॉम्बिनेशन पे चलते हैं ये सब कुछ। तो हम ईस्ट से शुरू करें, जापान में देखे जाए तो there's going to be a government change, new prime minister upcoming in। न्यू प्राइम मिनिस्टर का पॉलिसी ऐसा है कि अपने देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए उसका पॉलिसीज है, बट द करंट जापानीज मार्केट इज नॉट डूइंग गुड, इट इज ऑन अ लोअर स्केल। अगर यूरोप में जाए तो यूरोप में सब मार्केट्स अच्छे नहीं हैं, इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट जर्मनी इज ऑल्सो नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल। You go to central of Europe, there is a war which just got cooled off, Russia and Ukraine, and they still have the overflows of the problems which was there। और वेस्टवर्ड जाए तो यूएस में देखे जाए तो आपको पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स है, द टैरिफ वॉर विच इज इंटरनेशनल, एंड इंटरनल का क्या है कि यूएस डेप्ट एक बिटकॉइन में कन्वर्ट हो रहा है, बिटकॉइन इज गेटिंग पेग टू डॉलर 1:1, and with the anticipation that the bitcoin prices will be escalating at one point of time, which will actually bring down the US debt down। तो आप एक इन्वेस्टर के जगह बैठ के सोचिए, अगर आप यूएस डॉलर में इन्वेस्टेड हो तो यूएस डॉलर का हालात क्या होगा। सेम सोच फैमिली ऑफिस का भी है, सेम सोच इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स का भी है, सेंट्रल बैंक्स का। तो वो डिमांड अभी खत्म नहीं होने वाली। डिमांड अभी मुझे लगता है कि आसपास में कहीं खत्म नहीं होने वाले। एंड अभी और बोले जाए तो मिडिल ईस्ट में देखे जाए तो उधर का भी टेंशन है। एक जगह पे इजराइल बैठा है, एक जगह पे ईरान बैठा है, और यमन के अंदर अभी 2 भाई यूएई और सऊदी भाई है, मगर अंदर लड़ रहा है। मतलब जियो पॉलिटिकल सिनारियो जिस तरह से आपने समझाया ना उमेश, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने, हमारा शो है सिंपल है, और आपने इतने सिंपल तरीके से बिना कोई कॉम्प्लिकेशन के ये सिखाया सबको कि क्या होगा। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। गोल्ड पे भारत की जहाँ तक का सवाल, कंज्यूमर्स हम बिगिस्ट, मैन्युफैक्चर हम गोल्ड करते नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेड ही आता है। तो लेकिन लोगों को अटैचमेंट है, कल्चरल अटैचमेंट है, हिस्टोरिकल अटैचमेंट है, कोई नई चीज़ नहीं। इस स्पेस में आप आए हैं, आप जिस रीजन से आते हैं, आपका जहाँ कंपनी है वहाँ पे वैसे ही गोल्ड बहुत ही एक बिग, मतलब जब भी आपके शहर कोची में जाता हूँ तो सबसे पहले सब बड़े बड़े वो शोरूम दिखते हैं। लेकिन एक बात है कंजम्पशन की, कि मैं लोन लेना मैं गोल्ड लेना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, ज्वेलरी के लिए, शादी के लिए, त्योहार आपने जैसे कहे, एक तो वो है। लेकिन जो लॉक्ड अप गोल्ड, जैसे 25,000 टन का गोल्ड पड़ा हुआ है लोगों के पास, तो आप क्या कर रहे हैं इससे? आपका जो विजन है वो क्या है? इसको अनलॉक करने का है लोगों को एक, क्योंकि पहले भी कहते थे, जैसे वो मिस्टर नारायण मूर्ति की बहुत ही फेमस स्टोरी है कि हाउ हिज वाइफ प्लेज्ड गोल्ड एंड गॉट द मनी फॉर इन्फोसिस, और क्या क्रांति लेके आए इन्फोसिस। तो
ये कई घरों में ऐसा होता होगा, क्राइसिस भी होती है लेकिन उनको पता ही नहीं कि मैं इस गोल्ड का क्या करूं, पड़ा हुआ है गोल्ड लेकिन पैसे चाहिए। तो आप क्या चेंज करने चाहते हैं? तो आपने जो गोल्ड होल्डिंग्स के बारे में बताया 25,000 टन, मैं उससे शुरू करना चाहता हूँ। वो एक हाइपोथेटिकल फिगर है 25,000, हाँ, कई पता कई ही नहीं कई कई रिपोर्ट बोल रहे 30,000 टन है। हाँ हाउस होल्ड गोल्ड रिजर्व के बारे में बोल रहे हैं हम, भारत के गोल्ड रिजर्व के बारे में नहीं, हाँ भारत के हाउस होल्ड गोल्ड रिजर्व के बारे में बोल रहे हैं। और ये हमारे कंट्री का हाउस होल्ड गोल्ड रिजर्व कई कंट्रियों से भी ज्यादा है, बिल्कुल। कई कंट्री का सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व से ज्यादा है। एंड इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है ना, टू ड्रिल डाउन मोर, इसमें सिर्फ 15% का ज्वेलरी अभी प्लेज मार्केट में। अच्छा, सो आउट ऑफ दिस हाउस होल्ड गोल्ड सिर्फ 15% प्लेज मार्केट में। प्लेज मतलब मैंने दे दिया किसी को और प्लेज उसके करने के लिए, सो पैसे ले लिए। विद द प्लेज हाँ, मार्केट, ठीक। वही। सो 15% बाहर आया है प्लेज मार्केट में। और ये पूरे प्लेज मार्केट में देखे जाए तो ओनली 37% इज कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, the banks and the NBFCs. So regulated entities. Regulated entities to be very frank. तो अभी भी 15% का 37%। सो 15% पूरा 100% का गोल्ड प्लेज मार्केट बनता है, और उसमें से केवल 37% बैंक्स और एनबीएफसी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं जो आपको लोन दे रही है, बाकी सब 63% इज अनरेगुलेटेड एंटिटीज लाइक बॉन्ड ब्रोकर्स एंड लोकल मनी लेंडर्स एंड ऑल दीस थिंग्स। देखिए जाए तो इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री, ओके। और मैं मजाक के लिए बोलता हूँ किसी से, इंडिया एक ऐसी यूनिक कंट्री है where there's got first world and the third world problems also. So here we have got one side fighting for the LGBT rights, the animal protection, PETA and all these things. The other side we've got still 80% of population living on ration and all these things. So India is one large village to be very precise. ये tier 1 cities को side में करें तो 75% of India is one large village. जी. There the concentration of the unorganized sector is more. That is where actually we go in. हमारे कंपनी की पॉलिसी देखें तो हम ज्यादा से ज्यादा टायर 1 सिटीज में नहीं जाते, हम टायर 2, टायर 3, टायर 4, टायर 5 तक फोकस करते हैं। दिस इज व्हाट आवर फोकस पॉइंट इज। और ये हमारा जो हमारा ही नहीं पूरे देश के लिए ये सोच लेना चाहिए कि जो जितने भी अमाउंट हाउस होल्ड गोल्ड रिजर्व बोला है वो एक हाइपोथेटिकल फिगर, अभी भी उसका कोई हिसाब नहीं है। Because gold comes through traditional inheritance, generations, all these things. और पड़ा भी कहाँ रहता है पता पड़ा भी कहाँ रहता है, और हमारा बिलिंग सिस्टम भी आजू बाजू में ही ठीक हुआ ना, बिफोर दैट तो लॉट ऑफ लूप होल्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि ये जो हाउस होल्ड रिजर्व है, इफ द गोल्ड लोन कंपनीज आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी, द हाउस कन्वर्टिंग द हाउस होल्ड गोल्ड रिजर्व इनटू कैश, इसमें से दो चीजें के एडवांटेज है। नंबर 1, the gold gets accounted. Number 2, accounted money gets injected back into the economy. अभी जो कबर्ड में हाउस होल्ड के कबर्ड में पड़ा है, this would have contributed to the physical deficit couple of years before. But there is no positive contribution to the economy. अभी इसका लिवरेज किए जाए तो वो पैसा वापस इकोनॉमी आ जाएगा, and there will be a positive contribution to the economy. So that is the gold loan company's perspective. We feel that we are actually providing economic boosters to the local economy. अभी और ये if you look at the borrower aspect, so माने जाए तो 8 साल पहले या 7 साल पहले this was a distress activity. 7 साल पहले 8 साल पहले distress सब खत्म हो गया तो सब खत्म हो गया, हमारा आखिरी रास्ता है ये गोल्ड, this is the last hope of स्टिग्मा भी तो होता था इसके स्टिग्मा साथ, था, टैबू था कि जाके सोना आपने how will I जाके walk into a gold loan company, ऐसा टैबू भी था। मगर अब बहुत फर्क हो गया। like everybody used to tell me that gold loan is more feasible at south, not feasible at north. now आप देखे जाए तो साउथ या नॉर्थ में देखे जाए तो सब जगह गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो है। अब इंस्टीट्यूशंस में देखे जाए तो पोर्टफोलियो नॉर्थ में भी अच्छा चल रहा है। So it has come to an aspect that again, I as an individual, I travel across India. Like April and May are 2 months where I drive myself and I travel across India. We operate in 14 states.
I drive all the way, I visit all the places, because every region is different, every branch team is different, every customer region is different. So to get a feel, because whatever we do in our organization, we always do it in and around our customers, so that I have a ground zone feel. And what I have understood is that in the last few years, अभी ये distress एक्टिविटी नहीं है, दिस इज अ लाइफस्टाइल ऑप्शन. अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा रूरल के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि रूरल या सेमी अर्बन, टायर 2 से टायर 5 तक, क्योंकि मेरा ज़्यादा से इंटरेक्शन उधर होता है. फॉर देम, अगर अपने बेटे या बेटी को कॉलेज भेजना, तो इमीडिएटली ही थिंक्स ऑफ अ गोल्ड लोन टू ब्रिज अंटिल ही गेट्स द एकेडमिक लोन. अगर घर को पेंट करना है तो ही थिंक्स ऑफ अ गोल्ड लोन. अगर अपने छोटे बिजनेस शॉप में, इंजीनियरिंग शॉप में कुछ मशीन खरीदना है तो थिंक्स ऑफ अ गोल्ड लोन. ही वांट्स टू बाय अ फ्रिज, इमीडिएटली थिंक्स ऑफ अ गोल्ड लोन. द फार्मर, although there is agri loan available, but there are certain operational limitations where they have problems, where when he wants to do a 6-month crop cycle, he thinks of a gold loan. So gold loan has become the second, third, or max the fourth option in the tier 2, tier 3 and tier 4, tier 5 centers, because across the globe this is the fastest credit turnaround product. इससे भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या है ना, दिस इज द ओनली प्रोडक्ट वेयर द अंडरराइटिंग हैपेंस ऑन द ऑर्नामेंट, नॉट ऑन द इंडिविजुअल. अभी हमारे देश में देखे जाए तो इफ यू डिफॉल्ट ऑन ईएमआई ऑफ अ कार लोन, और इफ यू डिफॉल्ट ऑन ईएमआई ऑफ योर हाउसिंग लोन, यू आर डूम्ड. आपको और कोई लोन नहीं मिलेगा. तो आपका करेक्शन चांस किधर है? क्योंकि इधर हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम में रिस्ट्रक्चरिंग सबसे बड़ा टैबू वर्ड है. रिस्ट्रक्चरिंग वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत कॉमन है, मगर इधर बहुत टैबू वर्ड है. Where's your second chance? So second chance is the best available from the gold loan. अभी ये सब टायर 2, टायर 3, टायर 4, टायर 5 cities के बारे में बताया. Similarly, if you go to tier 1 cities, now the scenario is that gold loan has become 13th, 14th, 15th option. Because tier 1 cities में देखे जाए तो बहुत सारे options है fund raise करने के लिए. You even have apps in such a manner to help the organized banking customers to get credit access and all these things. So when we go to the rural sector, not only we are measuring the gold and bringing accounted money into the economy, we are also actually hand-holding the customers into a proper banking community. बिल्कुल. ऐसे एक social service भी हम कर रहे हैं. So this is what in a nutshell all about it. And the last thing आपने जो बताया, सारे gold loan companies केरला से आते हैं. And मैं जोकिंगली सबको बताऊं कि वी आर कोइंसिडेंटली आउट ऑफ केरला, बिकॉज ओनली लेस देन 1% ऑफ बिजनेस इज इन केरला. मैं गोल्ड शोरूम्स की बात कर रहा था. गोल्ड शोरूम्स वो भी, जो दिखते हैं गोल्ड शोरूम्स भी, गोल्ड लोन कंपनीज भी, सब लोग केरला से ही आते हैं. नहीं, वो सब लोग जनरेशंस के गोल्ड लोन बिजनेस या गोल्ड लोन शोरूम्स की बिजनेस करते हैं. क्योंकि मगर वी एज अ फैमिली, वी आर थर्ड जनरेशन टू द फाइनेंस बिजनेस, बट टू बी प्रिसाइज, वी जस्ट केम इनटू द गोल्ड बिजनेस इन 2012, समथिंग लाइक दैट. नहीं, उस पे भी मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि कहीं बहुत अच्छी चीजें पढ़ी जब मैं आपका रिसर्च कर रहा था, आपके थिंकिंग के बारे में, आपकी फैमिली के. लेकिन एक बात बताइए, इसको जस्ट टू मेक इट सिंपल अगेन फॉर पीपल. अगर मेरे पास गोल्ड है, चाहे बार है, बिस्किट है, ज्वेलरी है, और मुझे लोन चाहिए, आपने कहा कि फास्टेस्ट टर्न अराउंड है, तो ये फंक्शनली कैसे काम करता है? इस पे क्या इंटरेस्ट देना पड़ता है? क्योंकि आजकल एक और चीज आपने जैसे टियर 1 में कहा, जो हम देख रहे हैं कि अब तो एमआरपी ही लोग बोलना भूल गए. अब तो सिर्फ ईएमआई और क्रेडिट कार्ड स्पेंड, अपना पर्सनल लोन लेके आप उसको स्वाइप मार लीजिए, कुछ भी खरीद लीजिए, पता ही नहीं आपको इसकी असली वैल्यू क्या है. ईएमआई देख के लोग लिए जा रहे हैं. ये टियर 1 की प्रॉब्लम है, फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम जो आपने. हो सकता है, और है भी, फैक्ट है कि शायद पहले रूरल इंडिया में भी लोग अपने वही लोकल मनी लेंडर के पास जाकर 20-30%, 40% के इंटरेस्ट पे जाके पैसे ले लेते थे हिस्टोरिकली, अभी भी. तो अगर मेरे पास एक एसेट है, इस केस में गोल्ड,
और मैं आपसे लोन लेता हूँ आके, तो उसका क्या इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्या ये ज्वेलरी आप रखते हैं? एक और कंसर्न लोगों में होता है, अगर ये मेरी 4 जनरेशन की ज्वेलरी है, कि मुझे जब वापस मिलेगी उसी हाल में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इन चीज़ों को कैसे रिजॉल्व करते I would like to really touch upon the last statement. Bharosa. Gold loan is a very unique business हैं? where you not only need your lender's trust, where you also need your borrower's trust. इसके कंपैरिजन में देखे जाए तो माइक्रो फाइनेंस में बोरोवर्स का ट्रस्ट नहीं चाहिए, टू व्हीलर लोन में बोरोवर्स का ट्रस्ट नहीं चाहिए, हाउसिंग लोन में नहीं चाहिए, लैप लोन में नहीं चाहिए, बट दिस इज द प्लेस वेयर यू नीड द बोरोवर्स ट्रस्ट. वो क्या है ना, अपना सेंटिमेंटल इमोशनली अटैच्ड एसेट हमारे पास आकर रखते हैं, और टेक्निकली हम क्या करते हैं, हम 75% द मार्केट वैल्यू देते हैं, आप लोन देते हैं। सो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, वो अपना पैसा हमारे पास छोड़ के जा रहा है. हम्म, So that is the reason why the gold loan companies need a lot of trust from the borrowers. Hmm. And it will all depend on the way and the culture what you formulate. So we as a new company, हमें इतना बड़ा legacy claim करने के लिए नहीं है. But wherever we have, we might be less in number of branches, but wherever we are operating, whichever markets we are operating, we are at top 3 level in those markets. It is because we have bought in that culture. We understand gold loan requires a lot of empathy, hospitality, and a lot of human connect. तो ये गोल्ड जो आप लेते हैं उनसे, ये आप एक अच्छे लॉकर में वहाँ स्टोर करके रखते हैं? हमारे ब्रांचेस में ही स्टोर करते हैं, मतलब जो भी एक सेफ प्लेस में आप इसे रखते हैं. और इंटरेस्ट क्या होता है इस पे? सो इंटरेस्ट देखे जाए तो देयर आर स्कीम्स व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 9.5% ऑल द वे अप टू 13-14%. या सो इंडस्ट्री और में ड्यूरेशन आपने कहा कि क्विक क्रेडिट छोटी चीज. आई एम जस्ट कमिंग टू इट. इंडस्ट्री में देखे जाए तो सो मैं अपनी कंपनी ज्वाइन किया 2019 में. ओके, जब मैं 2019 में ज्वाइन किया तो मैंने पूरा माहौल को देखा, तो देख रहा था कि इट वाज इन्फेस्टेड विद 3 months, 6 months, 9 months स्कीम, और मेरे कंपनी वाज कंप्लीटली इन्फेस्टेड विद 3 months स्कीम. अच्छा, 3 महीने के लिए लोन? 3 महीने के लिए लोन. वो क्या है ना, सब लोग एक माइंडसेट पे बैठा था कि गोल्ड इज अ वेरी वॉलेटाइल प्रोडक्ट, सो वी विल बी एबल टू डू ओनली शॉर्ट टर्म टेन्योर. दैट वाज द माइंडसेट ऑफ द पीपल. सो आई हैड एन एडवांटेज ऑफ नॉट कमिंग फ्रॉम द गोल्ड लोन बैकग्राउंड. तो मैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करता था, या थिंक करने का मौका मिल गया. So then I walked in, I started studying the customer pattern. और देखे जाए तो एनी कस्टमर वॉकिंग इन, वो एक माइंडसेट के साथ आता है कि मैं मेरा ये गोल्ड का प्लेज में 30 days या 45 days में रिलीज कर देगा, एंड ही गोज फॉर द लोवेस्ट टेन्योर. एंड ही गोज फॉर द लोवेस्ट टेन्योर, एंड व्हाट हैपेंस इज दैट 60% of the time he will not be able to repay the principal on time, and he gets the principal repayment pressure along with the interest pressure. There's a tendency of losing it for auction. और गोल्ड लोन के सबसे अहम चीज क्या है ना, वो एक डिमांड लोन है. सो इन डिमांड लोन there is an option for the customer to pay the interest and principal as a bullet towards the end of the tenure. ये एक ऑप्शन है. But majority of the competitors or majority of the players in this particular field promote a bullet payment of interest and principal towards the end of the tenure. Why? Because there is an interest escalation captured in the contract between the customer and the company. That means if you have an X onboarding interest, if you don't pay the first month interest, there is X plus 1, X plus 2, X plus 3, ऐसे जाते रहते हैं. And nobody will follow up. That is the option being given. Why they give this option is because if he is not able to pay at that point of time, आप ऑप्शन कर दें, we will do it an auction, because it's highly liquidable asset. तो ये सब स्टडी करने के बाद मैं क्या डिसाइड किया, अभी आई टोल्ड माय टीम दैट in 2019, so I told my team, guys, we're going to come with only 12 month scheme.
Nothing less than 12 months. And for the customer, we are going to put it forward in such a manner that whatever number of days he is utilizing, just pay interest for that and let him pre-close at zero charge. But we want to give him a solace that वो अपने gold को hold कर सकता है. He'll be able to hold on to his ornament till the end of the tenure by just paying interest and keeping on to. Hold on मतलब उसके पास ही रहेगा. नहीं, उसके पास नहीं, ownership. Ownership. जब तक auction हो जाए, जब तक auction हो जाए तो ownership उसका ही है. हम सिर्फ custodian है. Correct. Okay. बिल्कुल. And मैंने बदले में मेरे टीम को क्या बताया? So guys, I need 3 customers for every customer you have now. Because you've been servicing the same customer 4 times a year. So I need 3 new customers for every customer you have now. Achha. And second thing is that what we need to do as a stark contrast is that we need to handhold the customer and educate him on the pros of monthly interest payment remittance. That is what we did in a stark contrast to what the market has done. So, हमारा बहुत simple है. We take the customer through the life cycle, take him till the end of the month. So, our target and agenda is that at the end of the month, he'll be left with that month of interest and he'll have the principal overdue. If he's not able to pay, he can arrange money from somewhere, close the loan. We will arrange a repledge for him once he closes the loan. And when he does a repledge, his net cash outflow will be very limited. If there is no gold price escalation. If there's gold price escalation, there's no problem for him. But just imagine if he's having a bullet of the interest at a higher ROI and the principal altogether, even if he repledges also, he will not have the benefit of it. So his probability of losing his ornament to auction with the methodology what the market does is on a higher scale than the methodology what we do. So in that aspect, our interest collection in terms of monthly against monthly accrual is between 65 to 75%, whereas the market collection is around 28. Market average collection is around 28%. और इसका पॉजिटिव साइड ये है कि हमारे कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा and we'll be attached. That is the confidence what we have in terms of customer acquisition. That whenever कितने customers आपने अब तक कर लिए? We have around near to 5 lakh customers. 5 lakh? Yeah. और इसका एक फ्लिप साइड भी है. So एक पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव भी होता है ना. So flip side ये है कि our ROI might be around 50 to 40 pips lesser than the competitor. But we will have a long-term relationship with the customer. Long-term business build कर रहे हैं आप. क्योंकि क्या है ना, customer once a auction done means is a customer lost. देखिए रूरल इंडिया में क्या होता है, इंसान जाके 10 लोगों को बताएगा कि देखिए मेरे साथ ऐसा हो गया, तो वो भी नहीं फिर करेंगे ट्रस्ट उनको कि कोई ज्वेलरी. क्योंकि हमने ये देखा कि रूरल इंडिया में गोल्ड प्लज करने के लिए कोई ब्रांड एफिनिटी नहीं है. तो फेस वैल्यू पे प्लज होता है. सो वी हैव ऑल लोकल स्टाफ. सर आपने हमारे जगह आके प्लज किया तो आप अपने दोस्त को बताएगा अच्छा मैंने उमेश के पास गोल्ड लगा दिया है. एंड इफ योर गोल्ड गोज ऑन ऑक्शन, आप अपने दोस्त को या पहचान वालों को नहीं जाके बोलते कि उमेश के पास से मेरा गोल्ड गया ऑक्शन में. आप बोलेगा कि इंडल मनी से गोल्ड ऑक्शन में हम इंडल मनी में वापस नहीं जाएगा. ब्रांड डिफ्लेक्शन हैपेंस ऑन ऑक्शन, बट देयर इज नो ब्रांच एफिनिटी फॉर प्लजिंग आल्सो. दिस इज द रूरल माइंडसेट. ट्रस्ट. लॉट ऑफ फेस वैल्यू, लॉट ऑफ इमोशन, ह्यूमन कनेक्ट. आप एसएमईज में भी जा रहे हैं, सेगमेंट में लोन दे रहे हैं? SMEs में भी दे रहे हैं, but we are more focused on gold loan. As I said, we cover a lot of MSMEs in terms of our gold loan. जैसे अपने मशीनरी के लिए, अपने कारोबार के लिए सब लोग लेते हैं. We have around 30% of availment in the MSME category in terms of gold loan. तो gold is your main predominant thing. लोन चाहे कोई भी हो. So 93% हमारा पोर्टफोलियो गोल्ड लोन में है. उसके ऊपर हमारा 6 to 7% है where we call it proof of concept. Proof of concept हम थोड़े products ready करके रखते हैं. We have a digital personal loan and we have a LAP loan product and all these things. We keep the proof of concept ready क्योंकि हम इतने volatile environment में काम करते हैं कि
पता नहीं कल क्या रूल चेंज होगा कि बताएगा कि परसों से गोल्ड लोन बंद करो, ऐसा कुछ रूल आ गया तो हमें तो, हम ऐसे बैठ नहीं सकते, कुछ करना है ना। इसके बारे में इतना फियर क्यों रहता है? ये तो मतलब अगर आप इसको अच्छी तरह से कर रहे हैं, कोलैटरल है आपके पास। नहीं, ये फियर नहीं है, दिस इज वॉलेटिलिटी ऑफ रेगुलेशंस एक्चुअली। नहीं, वही उसी की बात कर रहा हूँ। रेगुलेटरली रेगुलेशन इतना फेयर रेगुलेशन क्यों रहता है? रेगुलेशन अकेले हमारे लिए नहीं है ना, नहीं, आपकी बात नहीं कर रेगुलेशन रहा पूरे मैं। मार्केट के नहीं, लिए। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ इन द इन्वायरमेंट ये फेयर क्यों रहता है कि गोल्ड लोन। दिस इज नॉट अ फियर एक्चुअली, दिस इज बीइंग कंजर्वेटिव। See, we are on the finance industry, so we always like to be conservative than being super positive. We always like to have a plan B, a backup plan on what we इसमें do. एनपीएस कितने होते हैं? किसमें? गोल्ड लोन में। गोल्ड लोन में एनपीए बहुत कम होता है, इट इज लेस देन 0.5 समथिंग। वो भी 0.5 इसीलिए होता है क्योंकि आरबीआई के थोड़ा रेगुलेशंस है, ऑक्शन के प्रोसेस के लिए हमें थोड़ा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा एनपीए आज दिखेगा तो 15 दिन के बाद वो एनपीए भी नहीं दिखेगा। एंड वी ट्राई टू अवॉइड ऑक्शंस एज मच एज पॉसिबल। जैसे मैंने पहले बताया कि एक बार ऑक्शन हो जाता है इसका मतलब है कस्टमर लॉस्ट। So we actually try to handhold the customer and we try to take him to an extent that he retrieves his ornament. ऑक्शन हमारा लास्ट ऑप्शन है, अगर करना पड़े तो करना ही पड़ेगा क्योंकि रेगुलेटर वही चाहते हैं हमसे। बिल्कुल। ये जो आजकल डिजिटल गोल्ड का एक ट्रेंड है, तो डिजिटल गोल्ड के अगेंस्ट भी मैं लोन ले सकता हूँ कि नहीं, मुझे ऑर्नामेंट देना ही देना है आपको? नहीं, वो आई फॉरगॉट दैट पॉइंट। आप जब पहले बोल रहे थे गोल्ड बार, गोल्ड बिस्किट्स और डिजिटल गोल्ड सब कुछ है ना, आरबीआई ने एक रूल बताया कि सिर्फ ऑर्नामेंट के अच्छा अगेंस्ट गोल्ड लोन दे सकते हैं। वी आर नॉट सपोज टू फंड द बुलियन। ओके, सो इट्स ओनली ऑर्नामेंट्स। इट्स ओनली ऑर्नामेंट्स। और आपके मुताबिक टोटल जो गोल्ड का पूल है उसमें ऑर्नामेंट वर्सेस बिस्किट्स क्या होगा, कोई परसेंटेज? तो वो मुझे पता नहीं है, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। बट आई विल टेल यू मेजॉरिटी ऑफ द हाउस होल्ड गोल्ड लोन विल बी इन ऑर्नामेंट फॉर्मेट। एंड आप कह रहे हैं 1 साल तक का आप देते हैं लोन? 1 साल, नॉट मोर देन दैट। We had 2 years and 3 years product. We still have, but it is not very popularly running. So it is more used for immediate So needs. there are like, I've seen lot of startup MSMEs coming up. So अब देखे जाए तो हमारे देश में बहुत प्रमोशन होता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पीपल को सेल्फ एम्प्लॉयड होने के लिए, बट देर आर सर्टन लिमिटेशंस in the criterias and the banking patterns being kept now. It's not a complaint, but that is how the world works. So sometimes there will be a problem for people to start up. मैं जब स्टार्टअप के बारे में बता रहा हूँ, ये टेक स्टार्टअप्स नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक स्टार्टअप। somebody wants to start a cloud kitchen, somebody wants to start a small engineering company, all these things. तो मैंने ऐसे देखा है कि आई हैव सीन पीपल टेकिंग 2 years and 3 years loan. Say classic example बताए तो right after lockdown I had a mother and daughter, because I'm saying this specific because I was at the branch at that point. It was in outskirts of Bangalore towards the Mysore side. So mother and daughter came in and they wanted the 3-year gold. So I was there on a branch visit and I had a chance to interact with them. So they said they want to start a cloud kitchen. Then I asked that, what is your plan after 3 years? But the daughter was very specific. She was very educated, to be very precise. She said, sir, when I get into this, I'll have my financials running, my bank accounts also running. I'll make my balance sheets, everything. I'll ensure that within 1 or 2 years, I will be matured enough to go into the banking community. Then they will replace it. So they're using this as a bridge. Before loan. You are eligible for a bank loan. They're using this as a bridge. हमारे बेसिक बैंकिंग क्रेडिट पैरामीटर में देखे जाए तो पहले देखता है कि सिक्योरिटी है, ओके, नो सिक्योरिटी, एक्सपीरियंस है, नो एक्सपीरियंस, को बोरोवर का नेटवर्थ क्या है, को बोरोवर हैज गॉट एनी एक्सपीरियंस, ऐसे सब क्रेडिट पैरामीटर्स चेक करते हैं. सो सम ऑफ देम डोंट क्वालिफाई. करेक्ट. सो दे नीड एन इग्निशन समवेयर. सो आवर लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स एक्चुअली इज एन इग्निशन फॉर दी स्टार्टअप्स. जब मैंने लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स लॉन्च किया, सो it was one of the largest private retail banks in India. So the securitization head from Mumbai called me and he said that you're actually doing a market disruption.
मैंने पूछा सर क्यों, इतने लंबे पीरियड के लिए गोल्ड लोन देते हो तो नोबडी विल टेक इट फॉर सिक्योरिटाइजेशन. सो व्हेन आई से सिक्योरिटाइजेशन वी आर इन अ पोजीशन टू सेल द पूल टू बैंक्स बिल्कुल. एंड ऑल दीज थिंग्स. नोबडी विल टेक इट फॉर सिक्योरिटाइजेशन. मैंने पूछा सर आप लॉन्ग टर्म सिक्योरिटाइजेशन क्या लेते हो? ही सेड वी टेक व्हीकल लोन्स फॉर 5 years, वी टेक हाउसिंग लोन फॉर 15 years. तो मैंने बोला सर अब अपना व्हीकल लोन का एसेट और मेरा एसेट जरा देख लीजिए. व्हीकल लोन का एसेट हाईली डिप्रिशिएटिंग है, उसका मार्केट प्राइस डिसाइड करता है लोकल ब्रोकरेज कम्युनिटी. इधर मेरा एसेट का इंटरनेशनली बैरोमीटेड प्राइस है, और ये एसेट का पोजेशन और लिक्विडेशन इट्स वेरी डिफिकल्ट, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू बी वेरी प्रिसाइज. अगर पोजेशन भी हो गया तो यार्ड में पड़ेगा 1 साल 2 साल. दिस एसेट इज ऑलरेडी इन माई पोजेशन एंड लिक्विडेटिंग इट इज नेक्स्ट टू कैश. तो ऐसे देखे जाए तो कौन सा अच्छा है? It's a gold asset which is good. So I said, sir, everyone in India has been so much stereotyped that they are thinking of the gold price volatility. सब एक मिनट अपने शूज से बाहर निकल के ये सोचे कि स्विस बैंक कैसे गोल्ड बॉन्ड्स को फिनेंस करता है. There is something called a margin call, and that is how we work on. We have got the margin call clauses, everything in the contract. So we make ourselves very transparent, we educate the customer, and we ensure that he gets the maximum resource available in a justifiable manner, in a very viable manner from his ornaments. उमेश, आपने अपनी स्कूलिंग कुवैत में की, फिर आपने बीकॉम किया, आप विदेश गए, वहाँ से आपने एमबीए की, वापस आए, कुछ भी कर सकते थे. ये बिजनेस में क्या यही आपको एक ठीक बिजनेस लगा कि नहीं तो आपके जैसे क्वालिफिकेशन के तो लोग हर कुछ कर रहे हैं? मतलब मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस बिजनेस ने क्यों अट्रैक्ट किया आपको? चलो इसका भी एक स्टोरी है. सो एज यू राइटली सेड, आई फिनिश्ड माय डिग्री, देन आई वेंट फॉर माय सीपीए, देन आई जॉइंड SMI government fund in the Middle East and all these things. So I was a part of that fund. उसके बीच में मैंने MBA भी किया. And in 2000, so as I said earlier, this business was started by my granddad. So क्या है वो early 80s में वो वापस आया India. So early 80s when he came, actually he was called back by his family because they had humongous plantations across the Western Ghats, which is both on the Kerala and Tamil Nadu side, and a lot of agricultural properties. So when he came back, there were around 1,200 to 1,300 laborers which was working for them. So he recognized a last mile financial disconnect. So because there were a lot of intruders from local money lenders and all, because these laborers take advances from the money lenders and all this. So he understood that there should be a wage financing system just to be done. So उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस लिया और एक एडवांस वेज फंडिंग सिस्टम बनाया. इट वाज ओनली एक्सक्लूसिवली फॉर आवर डोमेस्टिक क्लास लेबर्स. 2009 तक ऐसे गया, एंड they were operating around 9 branches, specifically focusing on our labor force only because they were spread across. That's the reason 9 branches have been done. So when he passed away, that was the time when me and my father come into the picture. तो हमने सोचा कि चलो हम let's take the finance business more seriously, and let us take an NBFC license under the Reserve Bank of India. तो हम डिसाइड किया ये करेगा, मगर सोचा था क्या प्रोडक्ट में जाएगा. Since we all came from the international background, we got one of the big fours to be our consultant immediately at that point of time, as any international corporate background or people would. And that was around 2010, 2011, which was the worst phase for the gold loan industry. So उनका पहला एडवाइस ये था कि कुछ भी करो गोल्ड लोन मत करो. कुछ भी करो गोल्ड लोन मत करो. Think of microfinance, think of two-wheeler loan, all these things. Then I had series of meetings with the industry experts and stalwarts and everything. Everybody said a very negative on gold loan. मैंने पूछा नहीं,
सब लोग वॉलंटरली बताया क्योंकि उस समय गोल्ड लोन इंडस्ट्री के लिए बहुत बुरा था, बिकॉज दैट वाज द वर्स्ट फॉल फॉर द गोल्ड प्राइसेस एंड ऑल दीस थिंग्स. सब लोग वॉलंटरली बताया कि गोल्ड लोन बहुत बुरा है, डोंट टच इट एक्चुअली. और मुझे अभी भी आखिरी मीटिंग की याद है, एंड दैट वाज विद वन ऑफ द हेड ऑफ द करंट लार्जेस्ट रेटिंग कंपनी. एंड उन्होंने बात करते 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 मुझे बताया, अच्छा आइडिया अच्छा है फिनेंस इंडस्ट्री में आने का, उमेश कुछ भी करो गोल्ड लोन में मत जाओ. ये सब लोग ऐसे बोला कि मेरा एक बुरे आदत है. I have a back of thought process that when everybody sits, we need to run, and when everybody runs, we need to sit. So that's opportunity, you know. So we took a step ahead, and I tried to study what went wrong with the predecessors, and what was the mistake, what they did, why did they become susceptible to the crash, and all these things. Then I understood it, and then we said that if we have a systemic approach and we have a system controlled system in place, we wouldn't be exposed to these sort of risk measures. So the question and answer was again between me and my dad, and then he said, yeah, that's true, because he's an experienced banker. So I just bounced it off. He said, yeah, what you said is right. He said, let's go for gold loan. That's how I came out and told the consultants that we are going for gold loan. They still one of the big four partners tell me that you take advice from us, but you never listen to us. आपने अपने ग्रैंडफादर और फादर से ऐसा क्या सीखा जो आपके लाइफ का एक गोल है? मेरे ग्रैंडफादर से मैंने ये सीखा कि whatever we do, let us be true to our heart. Keep transparent. That is what I've learned from my granddad. And he says that you be true to your heart, be transparent, you can sleep peacefully at night. You don't have to be worried about anything. And from my father, what I have learned, something very unique, is that if there is a problem, the problem alone is not born. The solution is born along with the problem. The solution is something we should seek. Don't get so entangled with the problem. Don't get entangled with the problem. Focus on the solution. Focus on the solution. That means that you should look forward and walk. और अधिकतर हम लोग प्रॉब्लम में ही उलझ जाते हैं. प्रॉब्लम में उलझ जाता है और हम लोग टेंशन में बैठता है, प्रेशराइज होते हैं. पर्सनली मेरे बारे में बताओ तो मुझे ज्यादा प्रेशर हो जाता है, मुझे नींद आ जाता है. एक चीज जो आपने बहुत अच्छी करी वो ये है कि एक फैमिली रन बिजनेस में मैं देख रहा था कि आपके मेजॉरिटी जो डायरेक्टर्स हैं आपकी कंपनी पे वो फैमिली से है ही नहीं, प्रोफेशनल्स नहीं. सो स्पीकिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि नॉर्मली जब आप पब्लिक लिस्टेड बनते हैं तब जाके सोचते हैं कि अच्छा इतना कोटा है रेगुलेटर का तो मुझे इतने डालने चाहिए डायरेक्टर्स. अभी आप ऑलरेडी मेजॉरिटी आपके इंडिपेंडेंट. इसके भी कंटिन्यूएशन है कहानी में. सो व्हेन वी डिसाइडेड, व्हेन वी वांटेड टू गो टू गोल्ड लोन, हम सब लोगों को बताए थे हमारा कैपिटल हम 85 करोड़ लेके डाल रहे हैं. तभी सब कंसल्टेंट लोग सबने बताया, सब इंडिया में ऐसे नहीं करते, पहले 20 करोड़ लाते हैं, लिवरेज करते हैं, फिर 20 करोड़ लाते हैं, फिर लिवरेज करते हैं. तो मैंने पूछा क्यों? क्योंकि हमारा सिर्फ इंटरनेशनल एक्सपोजर था. मैं अपने ग्रैंडडैड के साथ 2 साल या 3 साल इधर काम किया था, मुझे ज़्यादा इंडियन सिस्टम्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं था. तो वो बोल रहा है कि डेट मार्केट का कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है. सो दिस शोज दैट द डेट मार्केट इज ऑल्सो कॉन्फिडेंट ऑन यू. इट्स लाइक अ थप्पा. The seal of confidence, a seal of assurity and all these things. मैंने बोला कि हमारा सोच अलग है यार. As I told you, the gold loan is a very unique business where you need to have your lender's trust as well as your borrower's trust. तो हमें ये दिलासा देने के था, we wanted to give the confidence to the stakeholders 360 degree to the organization, including the customers,
that we would be the last ones to allow the business to fail. तो हमारा इंटेंशन पहले से ही ऐसे डायरेक्शन में था. And again, because of the corporate inheritance background what we come from, and with all the places I have operated in different nations as I was a part of this particular fund. So what I have learned is that wherever we do our activity, we follow the rules of the land. That's principally what I have always followed throughout my career, and that's what I've been taught also. So governance was always epitome for us. And that is how we bought our governance. And today, as you rightly said, we have a 9-member board, out of which 4 are independent directors. And out of the 4 independent directors, we have got who's of who. We've got the ex-CEO of Amphi, who was ex-ED of IDBI. We've got the ex-MD of SBI. We've got the ex-ED of RBI, who is still on the banking licensing committee. We've got the ex-MD of LIC, who was the independent director to SBI till last year, who is still on the SBI Life board. Then on the non-independent side, out of the 5 members, there are only 3 family members again. So one is my dad, who is the CMD. One is me, who is the EDCO. One is my wife, who is the women representative. And apart from that, we've got a practicing chartered accountant in the board. And we've got an administrative director also on board. So although we are 100% stakeholders, we have ensured that governance is epitome on the board. And apart from that, we've got PwC as our strategic back office, where they are a part of budgeting, strategy, planning, MIS flows, functional management, and all these things. And before anything gets tabled to the board, also it gets vetted by them. Because we always believe that when we all work together for a long time, our directions get unified. So when we have an external agency along with us, they have a different think tank or a brain bank attached along with them. Of course, they have a lot of data available with them. And they will come with a different perspective. It's not that we swallow everything as it is. We take all the data and their advices, everything, we process, and we take the feasible ones, and what is not required, we just keep it aside. आपकी वाइफ भी इन्वॉल्व है बिजनेस में? She is in the director board. She takes care of some training parts and all, but not very much involved in business. ये फिटनेस आपकी कहाँ से आती है? सुबह से जिम में लग जाते हैं? सुबह I start my day 5:30. So 5:30 I start. By 6 o'clock I'm in the gym. अच्छा. And till 8:30 I have my workouts. 2.5 घंटे? Yeah. अरे बाप रे. फिर? I have my workouts, come home, then hit the office. फिर वापस घर जाते हैं, 9 बजे सोने का तैयारी करता हूँ, 9:30-10 के बीच में सोता हूँ. इतना ही है. It is not very interesting. मुझे लगता है I'll have to interview your wife also at some point. इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लाइफ नहीं है मेरा. नहीं, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है. मतलब हेल्थ पे फोकस करना, एक चेयरफुल किस्म के इंसान है आप. ये कहाँ से आता है आपके? सर, ये भी देखे जाए तो because of my previous assignment I used to live out of the suitcase. I used to be pressurized. I used to be pressurized so much. I was the CFO of that particular fund, and I did come to the position of the executive director level and all these things. But we used to have a global operation. तो मेरे ऊपर एक कीमैन इंश्योरेंस था, गवर्नमेंट कंपनी का. सो वो कीमैन इंश्योरेंस में हर साल मेडिकल टेस्ट होता था. So when I was around 31, I was diagnosed with high diabetes. Oh. Okay. Then I thought that's heredity because my mom and dad had diabetes, and I consulted the doctor. He said that looking at the history, the blood reports, the H1B/AC level and lipid levels and all these things, he said that it is not hereditary actually. It is because of your stress level, because this is varying. You might have had hereditary 40+. फिर दूसरे साल क्या हुआ, मुझे हाई कोलेस्ट्रॉल भी आ गया. फिर तीसरे साल क्या हुआ, मुझे हाई ब्लड प्रेशर भी आ गया.
Then onwards, the medical test should happen before 7:30 in the morning, before my first phone call. Otherwise, I'll fail my medical test. पर चलिए, उससे आपने सीखा. So then what happened is that I did not have time to concentrate on myself. वो एक बहाना था, सच बोले तो. हाँ, सब. So I always, till that point of time, I felt I don't have time to concentrate on myself. Then I said, I will quit. So slowly I quit by 2015. Then I started concentrating on my health. क्योंकि जान है तो जहाँ है, मतलब नहीं तो क्या फायदा है. मगर अभी मुझे क्या पता चला, even if you travel, even if you do anything, you decide to concentrate on your health, you can keep it up. You can keep it up. So wherever I go, if there is no gym also, I know how to exercise. Wherever I go, I have my pair of shoes and shorts, everything along with that. It's become a part of my life. कितनी अच्छी बातें आपने समझाई, उमेश. I wish you all the very best. Thank you, sir. Thank you very much. It was wonderful talking to you. Thank you very much. और I pray to God that you keep doing good work. Thank you very much. Lots of regards to your father as well. Thank you. Good. God bless you. Thank you. The pleasure is all mine for being here, and has been a wonderful conversation. Thank you, Umesh. Thank you.